Good morning, students. Hope you are fine. Yesterday, I have told you the meaning of voluntary and involuntary unemployment. Voluntary means with our own will, हमारी मर्जी से. Involuntary, without our will, हमारी बिना मर्जी के. Then an involuntary unemployment means a situation in which all persons who are able and willing to do work are not getting work. जो able हैं और willing हैं काम करने के लिए but still they are not getting work, that situation is known as involuntary unemployment. And voluntary refers to a situation when person who are able to work but are not willing to do work. एबल हैं, हेल्दी हैं, काम कर सकते हैं बट स्टिल वो काम करने के इच्छुक नहीं हैं, विलिंग नहीं हैं. दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. ऑल्दो वर्क इज़ अवेलेबल फॉर देम, जॉब्स अवेलेबल होती हैं बट स्टिल दे आर नॉट विलिंग टू डू वर्क. अनएम्प्लॉयमेंट के लिए दो सिचुएशंस होना बहुत ज़रूरी है. वन, दे शुड बी एबल टू डू वर्क. सेकेंड, दे शुड बी विलिंग टू डू वर्क. अगर दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं है, दे विल बी नॉट कैटेगराइज्ड एज अनएम्प्लॉयड. वो व्यक्ति एबल भी होना चाहिए, विलिंग भी होना चाहिए और उसके बाद अगर उसको काम ना मिले, दैट सिचुएशन इज़ नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. अब कई लोग होते हैं, दोनों में से एग्जाम्पल देखिए, जो एबल नहीं हैं, ड्यू टू एनी एक्सीडेंट दे हैव लॉस्ट एनी ऑफ द लिम्ब and they are not able to do work, or due to any condition they are not able to do work. हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे क्योंकि वो काम करने की उनकी इच्छा है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं. सेकंड है जो विलिंग नहीं है. एबल हैं, लाइक बैगर्स, बहुत हेल्दी हैं, एबल हैं बट वो काम करना ही नहीं चाहते, वो मुफ्त की खाना चाहते हैं, तो इनको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते. Unemployed people are those who are able, who are willing, but still they are not getting the work. So it is the difference between voluntary and involuntary unemployment. And now we'll learn the definition of full employment. Full employment refers to a situation where those who are able and willing to do work at prevailing rate, जो रेट मार्केट में वेज रेट प्रिवेलिंग है उस पर जो व्यक्ति काम चाहते हैं, जो व्यक्ति काम कर सकते हैं, उनको काम मिला हुआ है, देन एम्प्लॉयड हैं अगर वो सभी, दिस सिचुएशन इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट. सो इट इज़ दैट सिचुएशन in which all resources in the economy, land, labor, capital are fully employed, and but for simplification, meaning of full employment is restricted to labor market only. However, frictional, structural and voluntary unemployment can coexist, लेकिन इसके साथ साथ कुछ परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट की रहती है. Maybe there is condition of full employment but still इनकी coexistence रहती है, frictional, structural और voluntary unemployment. And within the state of full employment these can exist. A certain percentage of unemployment, say up to 3%, is considered as natural rate of unemployment due to frictional and technological changes. Although there is no consensus among economists on this point, लेकिन फिर भी इसमें डिस्प्यूट रहता है कि कितने परसेंट नेचुरल है. एंड वन टर्म इज देयर अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर एंगेज्ड इन जॉब्स बट दे डू नॉट गेट दीज जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, एफिशिएंसी एंड क्वालिफिकेशन. कि जो व्यक्ति एक पर्टिकुलर काम के लिए क्वालिफाइड हैं, एक पर्टिकुलर एजुकेशन उनके पास है, but they are not getting work according to their qualification, then they will be called underemployed. For example, one person can do 8 hours a day. 8 घंटे एक नॉर्मल वर्किंग आवर हैं किसी भी नॉर्मल पर्सन के, एंड इफ ही इज़ गेटिंग वर्क फॉर 4 hours, then he will be underemployed.
और 4 घंटे वो खाली बैठा है, ओनली 4 आवर्स के लिए उसको काम मिला हुआ है, तो ये सिचुएशन है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। और सेकंड सिचुएशन का एग्जांपल आपको दिया जा सकता है कि सपोज बहुत हाईली क्वालिफाइड कोई पर्सन है एंड he wants to be a teacher, but he is not the job of a teacher and he is doing the work of a peon. So this work is not according to his capability or his qualification. Then this person also will be called underemployed. Now, meaning of equilibrium level of income. It is that level of income in which aggregate demand equals aggregate supply. AD is equal to AS, we have already read about this. And now equilibrium related to full employment and underemployment. कीन्स ने ये कहा था कि जो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम है, जो AD is equal to AS की सिचुएशन है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकती है और अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकती है। जबकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये व्यू था कि एन इकोनॉमी ऑलवेज वर्क्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बट Keynes explained this, that an economy can be in equilibrium at both stages, full employment and underemployment both. So first is full employment equilibrium. The level of aggregate employment corresponding to equilibrium level of aggregate supply is known as equilibrium level of employment. And full employment equilibrium, AD is equal to AS with full employment of resources. So full employment refers to that situation, that equilibrium, AD is equal to AS when all resources in the country are fully utilized, fully employed. Simply put, when equilibrium between AD and AS takes place at full employment of resources, this is called full employment equilibrium. And there are no unused resources, there is no involuntary unemployment. Aggregate demand is just sufficient to ensure full utilization of all available resources. It also indicates that in such a situation aggregate demand is neither in excess nor in deficiency but equal to supply, कि aggregate demand aggregate supply के बिल्कुल equal है, ना excess है ना deficient है. And situation of full employment equilibrium is can be shown by a diagram also. This is AS, this is AD, and here we are showing income or aggregate supply, and on y axis aggregate demand. So here we are showing of situation of underemployment equilibrium. AD is equal to AS at E point and it is full employment equilibrium. It is full employment equilibrium, but sometimes AD falls deficient. कई बार AD normal level से कम रहती है AD का level, तो ये AD1 full employment से नीचे है, but it is also intersecting AS line at E1. लेकिन AD fall होने पर भी, full employment से कम होने पर भी AS के बराबर रह सकती है, AS कर्व को इंटरसेक्ट कर सकती है. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. Underemployment equilibrium point. So economy is at full employment equilibrium at output level when those who are willing to work at prevailing wage rate are getting work. So how to reach the level of full employment? अगर एक country under employment level पर है तो उसको full employment level पर कैसे लाया जा सकता है? Increase in government expenditure to pump more money in flow,
एंड रेपो रेट शुड बी डिक्रीज्ड. रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है. तो रेपो रेट अगर डिक्रीज हो जाएगा, लोन्स विल बी चीपर and commercial banks will have more loans and they will lend more money to public. Then central bank should buy government bonds and securities from commercial banks to increase cash stock of banks for lending. और central bank government के bonds और securities commercial bank से खरीदेगा. Money flow will go back to commercial banks and their lending power will increase, and in this way the underemployment situation will improve to full employment level. So students, read thoroughly from book whatever is taught and make your notes properly in your notebooks. It's all for today. Thank you.